चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. ગુડ આફ્ટરનૂન. વેરી ગુડ. સાક્ષી, આજે પણ કેમેરા ઓન રાખવાનો છે કે નથી રાખવાનો? आज तो रखने वाली हूँ. ओके, ग्रेट. चलो, सुपर. फटाफट कल हमने जो डिस्कस किया पहले वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी. तो रैपिड फायर रिवीजन. चलो फटाफट. तो कल हमने डिस्कस किया स्किल्स ऑफ मैनेजर. याद है थोड़ा थोड़ा? स्किल्स ऑफ मैनेजर. बराबर. चलो, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? देव. देव देव से स्टार्ट करते. देव, जेटलू याद हो एटलू. हाँ देव, अनम्यूट करो. सर मैं के पेलो निजामपुर वाળો. दो જેટલા દેવ હોય બધા જ નિજામપુર વાળાને પહેલા ચાન્સ આપી દો. ઓહો, સરસ. ડાયો દીકરો, કેટલો ડાયો દીકરો છે. સરસ. હા દેવ, દેવ ફ્રોમ નિઝામપુરા. પછી ગોયલને બીજો ક્વેશ્ચન પૂછી આપણે, વાંધો નહીં. યસ દેવ. હેલો, આજે બોલશે બેટા? હા સર. હા, અહીં આજે જ બોલવાનું છે. સર સ્કિલ્સ ઓફ મેનેજરમાં એટલે મેનેજમેન્ટ, પછી બીજું હા હા, લીંબુ પાણી. બેટા ઠોકા ઠોક કરીએ છીએ આપણે ને, જોરદાર ગપ્પા મારીએ છીએ. સ્કિલ્સ ઓફ મેનેજર 3 લેવલ જેવો હતા કે 3 લેવલ? ટોપ, મિડલ, બોટમ. હા, હે માં માતાજી, યાદ આવ્યું. સરસ. સર એમાં ટોપ લેવલ પર હોય છે, ના બોટમ લેવલ પર ટેકનિકલ. વાહ, સરસ, પરફેક્ટ. પછી ટોપ લેવલ પર જે મેઇન જે ડિસિઝન્સ હોય છે સર, કશું તો હોય છે સર. ચલો આગળ. પછી સર જે પ્લાનિંગ હોય છે જે ટોપ લેવલ પર થાય, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેરી ગુડ. પછી બોટમ લેવલ પર સર થોડું થોડું કશું કશું થાય છે સર, થવા દો સર. સરસ, वेरी गुड. हाँ चलो चलो, याद कर ले. खुशबू को बोलना है. हाँ, खुशबू ने रेज हैंड किया है, दोनों हाथ ऊपर कर दिए. यस खुशबू. टॉप लेवल पे कंसेप्चुअल और आइडिया आएगा, जो मतलब प्लानिंग करता है, सब डिसीजंस लेता है वो. फिर बॉटम लेवल, मिडल लेवल और टॉप, तीनों पे ह्यूमन रिलेशंस आएंगे, और बॉटम पे टेक्निकल आएगा. बॉटम पे वर्क होता है, और मिडल लेवल सब जगह पे मैनेजर अवेलेबल होते हैं. परफेक्ट, बराबर है. चलो सब लोग वापस एक बार सुन लो, ठीक है? देव, तूने जितना बोला वो राइट ही बोला, लेकिन थोड़ा और भी हमें डिटेल में जाना है. देव ने जितना इंफॉर्मेशन दिया वो राइट ही था. गोयल साहब, તમે भी सांभळजो, है ना साहब? चलो, अब तो टॉप लेवल पे जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स तो ऑब्वियसली रिलेटेड टू आइडियाज, बराबर. फिर ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो है, ह्यूमन रिलेशन, वो टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडल लेवल पे भी चाहिए, और बॉटम, बराबर. और बॉटम लेवल पे कौन से अपने को स्किल्स चाहिए? बॉटम लेवल पे कौन से स्किल्स चाहिए? कौन बताएगा? बॉटम लेवल पे टेक्निकल, बराबर. बॉटम लेवल पे कौन सा? टेक्निकल, मतलब रिलेटेड टू थिंग्स. एग्जांपल दिया था ना वो कैमरा मैन वाला, कैमरा बिजनेस, कि अगर आप कैमरा का शोरूम अगर ओपन करते हो तो कैमरा की टेक्निकलिटी, चालू बंद केवी रीते थाय छे, छोटा मोटा आपको नॉलेज होना चाहिए. फिर ऑब्वियसली आपको रिलेशंस मेंटेन रखने पड़ेंगे सारे लेवल्स के लोगों के साथ. और तीसरा, टॉप लेवल पे मतलब खुद का कुछ आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, नए नए आइडियाज आपको लेके आने पड़ेंगे, बराबर. परफेक्ट. 3 स्किल, टॉप, मिडल, बॉटम, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग चीजें. चलो, आज हमें टॉपिक पे जाना है वापस अपने प्लानिंग के ऊपर, बराबर है. प्लानिंग वाला जो टॉपिक, राइट, आगे जो आपका जो है वो आने वाला है. प्लानिंग बचपन में हमने पढ़ाई है बहुत बार, बीच में हमने डिस्कस भी किया था प्लान क्या होता है. तो प्लान मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर से रिलेटेड हो. प्लानिंग इज व्हाट? समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फ्यूचर. सोची हुई चीज कुछ हम लोग मतलब जो है वो एडवांस में कर लेते हैं. कुछ ऐसी चीजें जो हम एडवांस में सोच लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग, बराबर है. अब आप सबको पता होगा वडोदरा में बहुत सारे ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, सुना है आपने ऐसा? वडोदरा में बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, मतलब बोल सकते हैं प्लानिंग चल रहा है कुछ.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ से बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं અને આ લોકોને વરસાદના ટાઈમ પર જ કામ કરવું હોય है कि नहीं मेजोरिटी है कि नहीं तो ही तो फिर हमारा असली मेंढक बाहर आएगा स्टंट होंगे ना ऐसे खतरनाक खड्डे हो जाएंगे जोरदार खाड़ो कर दियो ना पूर्वान तुम्हारी जवाबदारी है कि नहीं तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुपर है ना संस्कारी नगरी ऑन पेपर છે ને સંસ્કારી નગરી વડોદરા બરાબર હું તમને સ્વાગત કરું છું વડોદરામાં આપણે જરા સફર કરવા જઈએ છીએ વડોદરાના ठीक है तो एक छोटा सा वीडियो हमारे संस्कारी नगरी से जुड़े हुए वडोदरा के अपकमिंग प्रोजेक्ट से राइट चलो तो ध्यान से देखना फिर हम डिस्कस करेंगे चलो दिख रहा है कुछ आपको अच्छे से स्क्रीन पे ठीक है चलो चालू करते हैं ध्यान से देखना ध्यान से सुनना The city of Vadodara is a bright shining star on the horizon of development. The most important project under Smart City Mission, City Command and Control Center, which is providing immediate and effective services and ensures safety and security of the citizens, has been developed in the center of Vadodara city. It helps in being connected to multiple systems in a single integrated platform like CCTV cameras, smart traffic management, environmental sensors, emergency call box, public address system, solid waste management, city bus monitoring, disaster management. Thanks to the Command and Control Center, we are able to carry out city operations quickly and more efficiently. The City Command and Control Center was inaugurated on 22nd October 2017 by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. A noteworthy fact about the CCC project is that this project was commissioned in record time of 7 months, including building construction. The other project of Smart City, City Wi-Fi, is in PPP model, and in this project, fiber network and intelligent poles are also a part of CCC project to save project cost. With CCC, other projects like GIS, ERP, Water SCADA, ITMS, My Vadodara mobile app, encroachment management have been made live, which is helping the safety and security of the citizens. And also, the citizens are proud to be digitally empowered and are happy to be a part of this digital governance journey. Vadodara has got a distinction of being known as the cultural capital of Gujarat. Baroda, now Vadodara, the erstwhile princely state, had a long tryst with history that can be traced back to the 1st century to the present vibrant Vadodara. The majesty and grandeur of this city of monumental charm has attracted all alike. Vadodara, the testimony of exuberance, the priceless legacy of the great visionary Sir Sayyajirao Gaikwad III, has been a favorite of historians, architects, builders, and tourists. The unmatched beauty of its palaces, temples, museums, stepwells, statues, and buildings is not only an architectural piece, but also gives an insight into the vision of the rulers of the city. The old city of Vadodara is crowded and extremely busy. This square fortified walled city with 4 gates in 4 directions, Laharipura Gate,
Champaner Gate, Gedi Gate, Mani Gate, and the imposing Manvi at the center, the city's vortex, was originally called Kila-e-Daulatabad. It is believed to have been built by Khalil Khan, son and successor of Mahmud Begda of Champaner. Considering the need for significant efforts to upkeep the great historical gates, we undertook and commissioned the task of rejuvenation of the four gates and the Manvi Pavilion in consultation with experts, professionals, historians, and locals. We have recently completed restoration of all the gates and Manvi Pavilion. To promote tourism, a local heritage sightseeing tourist bus has been introduced. This attempt provides a fair opportunity to boost the economy and generate employment locally. In an attempt to appreciate the talent, the local artists were given scrap of various departments and were asked to use their creativity. This resulted into wonderful creations in the form of sculptures. These sculptures beautify various islands of the city and have proved that the city has potential to showcase Vadodara's art and culture. All in all, we are sure that a well-organized restoration and conservation work to bring back the past glory will sensitize the local communities towards the historical value. As a part of rapid development, commissioned the ultra-modern technique of providing potable water, the elixir of life, to the city dwellers of Vadodara. The municipal corporation procures approximately 500 million liters of water from different sources such as French wells of the river Mahisagar, Sayaji Sarovar, and Khanpur water treatment plant. After procurement through feeder line, water is distributed to the citizens through pipelines from various distribution centers. In the earlier days, in the absence of modern technology, it took a long time to repair leakage of the feeder line and to restart uninterrupted flow of water. With a view to overcoming these problems, the Municipal Corporation of Vadodara has recently prepared SCADA-based water management project at a cost of rupees 27 crores. The Gujarat Info Petrol Limited, a government-appointed company, has extended expert advice in the matter. As a part of this project, 76 electromagnetic flow meters, 80 butterfly valves, and 108 pressure transmitters have been installed on the feeder line. The most modern technology would enable to provide real-time information of the water level of overhead tanks and would also inform about the chlorine level in the water through city command and control station. Introduction of this technology will enable in central monitoring. The consolidated information will be available on the cell phones of the concerned engineers involved in the project, and this in turn will facilitate precise implementation of the system, and thus waste of water would be controlled. Portable water vending ATM operated on battery cars. That too, lithium batteries is first of its kind in India. A PPP initiative of Smart City Vadodara and its agency DNI Global. Water provided with assurance of best quality and cold to floating population across the city is leading to many positive impacts such as safe and cold drinking water, portable infrastructure, hence no stress of location and additional power or water support, employment for the youth, handicap and women to man the water ATM. Overall, a positive impact on society and health of citizens in Sanskar Nagari, Vadodara. With the intention of housing for all, Vadodara Municipal Corporation
has successfully implemented and executed government affordable housing schemes. Total 58,093 dwelling units are approved under Pradhan Mantri Awas Yojana and various other schemes, among which 38,588 dwelling units are completed and allotted to beneficiaries, and 9,535 dwelling units are under progress, whereas 6,460 dwelling units are recently approved and are under tender stage. The aim of ensuring that the land resources are utilized to its utmost capacity and so that every Indian has a concrete home to live in. The idea is to eliminate slums, especially from urban areas, and to provide every Indian a permanent home to call their own and a better standard of living and upliftment of their livelihood. In the Digital India Initiative, by uniting more than 22 lakh Barodians under one screen, under one application, My Vadodara application, connecting Barodians to the city with probably India's most advanced city-based civic services application, which not only facilitates the citizens to register complaints via traditional routes or forms, but crowdsourcing their issues via GIS technology by simply uploading the image of the complaint, which will allow our advanced technology to automatically geotag to understand the nature, location, and intent of the complaint without burdening the citizens for other details. Emergency services ranging from direct dialing for ambulance, police, fire brigade to a specialized panic button designed for senior citizens to automatically call SOS and notify registered family of the sufferer's location. Also covering children emergency and women helpline numbers. Empowering citizens to a smarter lifestyle. My Vadodara application. Vadodara's Digital India Promise. Efficient public bus service was a matter of grave concern in the city of Vadodara earlier. The city had just 50 number of buses playing on limited routes, catering service to merely 45,000 passengers daily. On 15th August 2017, under the Smart City Mission, Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani launched a new public bus service system under the PPP model. In a short span of just over 8 months, more than 150 buses, well equipped with LED display, free Wi-Fi, mobile phone charger facility, and GPS-enabled bus tracking facility have been made functional with zero capital investment by the Municipal Corporation of Vadodara. There has been a considerable increase in the number of passengers who avail the bus services from 45,000 to 1,20,000 in a period of less than a year. The number of students availing this service has also increased from 25,000 to 70,000. Unlike yesteryears, the bus service has now reached the far-flung corners of the city, covering more areas. An integrated central city bus terminal, Jan Mahal, which is a signature project of Vadodara, the north and south zone bus terminals are also getting ready to cater to the facilities of efficient bus service to the citizens. Public Wi-Fi project will help citizens of Vadodara to reach, connect, and empower people throughout the city to improve education, increase citizen engagement, and further bring more opportunities. PPP Vendor invest approximately 200 crores Indian rupees or 2 billion Indian rupees in this project.
This project do not have any financial burden on corporation or smart city and also get positive premium of rupees 22.41 crores from this project. As part of this project, 450 intelligent poles will be installed at strategic locations across Vadodara. The poles will have fancy, aesthetically designed, visually attractive designs including gazebo, fancy LED street lights, etc., which will give it a distinct look. Citizens will get free Wi-Fi for 100 MB or 30 minutes daily. Over and above this, they will get free accessing for government websites. Each pole will have wireless access point and smart billboard. The poles will have provision to install other smart elements such as CCTV camera, environmental sensor, public address system, emergency call box, etc. Smart billboards will display civic and public services related messages such as rain, flood alerts, swine flu alerts, etc. This project, Public Wi-Fi and Intelligent Poles on PPP model, was inaugurated by Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani on 14th August 2017. Vadodara, the smart cultural capital of Gujarat, has been in forefront in adopting location-based services through implementation of a world-class geographical information system. Its highly intuitive spatial and non-spatial data include more than 70 layers of strong geospatial mapping covering every facet of the city, from drainage lines to parks and gardens, from internal road network to gas and pipeline network, all of which captured on a high-resolution satellite images taken over a period of time. This data is relevant, updated, reliable, and accurate with a robust GIS data management framework and a team of GIS engineers working round the clock at Vadodara GIS Cell. In order to achieve its end objective of spatial governance, Vadodara has developed an enterprise-wide GIS using open source technology, keeping guidelines of Government of India in mind and thereby also saving costs. This GIS platform addresses city-level challenges related to enhanced service delivery, accurate planning, and informed decision-making by its different unique characteristics like plan, dig, and monitor tool, geo-enabled door-to-door property survey, integration with solid waste management and city bus monitoring, geotag complaint management system, innovative initiatives. All of these functionalities and many more special analytics as well as geographical queries are integrated with world-class command and control center acting as heart of the city administration and monitoring, and thus truly making Vadodara a geospatially covered smart city. होप आपको आपके एरियाज दिखे हो सर मारू घर भी देखाયું હતું है ना सर અહીંયા જ રહું છું સર देखाયું હતું राइट हमने एक मतलब आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखा जो गवर्नमेंट का एक अच्छा पार्ट है क्योंकि अभी दुनिया में क्या चल रहा है गवर्नमेंट એટલે है ना तुम्हारा रोज जुबान से जो निकल रहा है वो तो मतलब ऐसा होता है बहुत बार कि मतलब कभी कभी आपको वो अच्छी साइड तो दिखती नहीं है ना तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जो लोकल मतलब बचपन से अगर वडोदरा में रहते हैं यू कैन एक्चुअली सी सम चेंज मतलब जो लोकलाइट है उनको तो पता चला कि हाँ अरे આવું તો હતું જ નહીં યાર આ પહેલા એરિયા એટલે આટલું બધું डेवलप થઈ ગયું इतना सब ऐसा हो गया तो मतलब वो फील आपको आएगा मतलब नहीं दो साइड होते हैं कॉइन के तो कभी कभी वो अच्छा वाला जो साइड है वो आप देख लो और ऑब्वियसली मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट आप देख रहे हो एग्जिस्टेंस में है और कुछ तो अपकमिंग है अब जैसे कि नहीं फ्री वाईफाई वाला हाँ सर મળતું नहीं सर कनेक्ट नहीं થતું बराबर है कि नहीं तो वो होता है लग चुका है हाँ एग्जीक्यूशन में डिले वो तो हमारा स्टैम्प मारा हुआ इंडिया पे एग्जीक्यूशन में डिले થવું જોઈએ
जल्दी हो जाएगा तो केस हो जाएगा आप पे, तो वो पॉसिबिलिटी है, बट दैट इज ओके। नहीं, एटलीस्ट रेडी मटेरियल तो है अवेलेबल, बन तो चुका है। हमने देखे ऐसे वाईफाई के कितने सारी जगह पे खंबे देखे, कितनी बार जब ट्रैफिक सिग्नल पे उभा रही है तो हम डाउट है आ टीवी કેમ લગાવ્યો હશે, આ એડ કેમ ચાલે છે આમાં, है कि नहीं? तो बहुत बार हम चीजें मतलब हमारे सामने दिख रही है कि आटला બધા कैमरा लगावવાની જરૂર છે, એટલે માસ્ક પહેર્યું છે, हेलमेट પહેર્યું છે, लेकिन सीए सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर ये कहाँ पे आपको पता है? आप शायद आप बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, अकोटा ब्रिज जैसे ही क्रॉस होता है, अकोटा ब्रिज जैसे क्रॉस करोगे तो नहीं आगे मेन 4 रास्ता आता है, अपने राइट मारते हैं तो प्रताप नगर की तरफ, सीधा जाएंगे तो मांडवी की तरफ, तो वो जो 4 रास्ता है वहीं पे कॉर्नर पे ही है, बराबर है। और यहाँ पे मतलब सेंट्रली पूरा, और आज हम इसलिए तो देखते हैं ना बहुत सारे हम और वडोदरा के पेज पे जो भी सारे मतलब अगर कोई भी क्राइम या कुछ भी होता है तो कितनी बार हमने ऐसा देखा बहुत जल्द हमें ना पकड़े जाते हैं, बहुत जल्द पकड़े जाते हैं। अब जैसे कि आज और वडोदरा में आया था कि किसी ने मतलब जो है वो ने कोई चोरी वोरी कर ली होगा, तो एटलीस्ट वो कार का नंबर प्लेट भी मतलब कार का नंबर प्लेट मिल गया, तो वो कार के नंबर प्लेट से, वो कार के नंबर प्लेट से क्या होगा पता है? मतलब स्मार्ट सिटी है तो खाली कार का वो नंबर प्लेट एंटर करेंगे ना तो उसका वो सीसीटीवी क्या करेगा, जहां जहां से वो कार गुजरी होगी स्कैन करेगा, मतलब पूरा डिटेक्ट हो जाएगा और पता चलेगा कि कार जो है वो कौन से टाइम से कहां से लेके कहां तक गई थी, तो एटलीस्ट वो रूट पकड़ सकते हैं, वो लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। जबरदस्त है, तो बहुत अच्छे लेवल पे भी मतलब चीजें हो रही है, ऐसा भी नहीं है मतलब नहीं बोलते अहमदाबाद पुलिस की तारीफ करते हैं कि अहमदाबाद वाले ने आके यहाँ से मतलब पकड़ा, वडोदरा की पुलिस क्या कर रही है? अरे जो कर रही है वो तो दिखा नहीं रहे, है ना? मतलब नहीं ऐसे ऐसी चीजें में 99 अच्छी चीजें आपने की लेकिन एक खराब कर दी तो मीडिया तो एक ही दिखाएगा क्योंकि उसका तो वो काम है ना वो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, और अभी जैसे जो चल रहे हैं वो देखा, अभी बहुत बवाल चल रही है ये विश्वामित्री रिवर को क्लीन करने को लेके सब जो चल रहा है प्रोजेक्ट, बड़ा साफ सफाई हो रही है, तो अगेन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसने केस कर दिया वापस, क्या कि भाई ये जो बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं, बराबर। तो इन शॉर्ट मेरे को लगा कि भाई प्लानिंग का जब टॉपिक हो तो हमारे लिए जो सबसे मेन चीज है वो क्या है भाई, अपने खुद वडोदरा के अपकमिंग प्लान्स देख ले, प्रोजेक्ट वेरीफाई करे, इसका फायदा हमें ही आगे जाके कहीं ना कहीं होना चाहिए और होने भी वाला है, बराबर है। तो आई गेस बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, जब फेस टू फेस अभी क्लास पे मिलना ही है तो वहां पे हम जो है वो ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड करेंगे, बराबर है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो क्लास पे अगेन दिखाना जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो आई थॉट मैं आज आपको ये बड़ा सा एक वीडियो था ऑब्वियसली, लेकिन एक सफर हो गई हमारी वडोदरा की, कितना टाइम थे वो फरवा नहीं निकले, तो भाई आपको घुमा दिया, थोड़ा यात्रा हो गई आपकी, ठीक है। तो विल मीट फेस टू फेस, बराबर है, और ये प्लानिंग वाला टॉपिक हम आगे जो है वो बढ़ाएंगे। चलो तो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो, बाय सर, बाय बाय।